Good morning, all. In fact, if you remember in the last lecture, we have covered all the physiochemical aspect of the municipal solid waste. If you remember, I told you all the chemical, physical, biological properties of municipal solid waste before actually you're talking about a management. Okay, so I deliberated upon so many things in the last lecture कि waste आपके पास आ गया है, आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं वही कंसर्न आपसे बार बार कर रहा हूँ कि बेटा वही कंसर्न आपके साथ बार बार शेयर कर रहा हूँ बेटा, ये चीजों के लिए आपके साथ कि हमें यहाँ पे इस चीज का डेलिब्रेशंस करने की जरूरत पड़ रही है कि हमें वेस्ट का करना क्या है। और एक्चुअली बाहरली कंट्री का जब डाटा दिखाएंगे, हम बात दिखाते हैं कि दे आर वर्किंग ऑन देयर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन अ दैट पर्टिकुलर मैनर कि दे डोंट वांट देयर वेस्ट शुड गो टू द लैंडफिल साइट। अब लैंडफिल साइट क्या होती है, उसकी डिजाइनिंग क्या होती है, कमिंग लेक्चर्स में आपको बताने वाले हैं विद डिटेल। लेकिन अल्टीमेटली व्हाट दे आर वर्किंग ऑन वेस्ट टू एनर्जी। और हम एनर्जी पहले ही इनएफिशिएंट है हमारा कंट्री, और सबसे बड़ी बात इनएफिशिएंट है हमारा इकोनॉमी, इतनी डाउन है कंट्री की हमारी, और एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास एप्रोप्रिएट नहीं है। फिर भी हमारे पास इतना वेस्ट है और वेस्ट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा वो चीज। और वो बाहरी कंट्रीज जो मैं बात कर रहा हूँ, उस कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, they are energy efficient countries, surplus energy resources, still they are converting their waste to energy. पॉपुलेशन कम है तब भी वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे पास पॉपुलेशन सेकंड मोस्ट है आफ्टर चाइना, और इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है, हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वही बात यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट है। वेस्ट मैनेज क्या है कि हमारे पास वेस्ट एग्रीगेशन नहीं है, हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी इसकी बहुत बड़ी, कि जब आप अपने कैंपस में आए थे, व्हेन यू आर इन द कैंपस, तो कैंपस में जब फिर वापस आओगे आप डाटा कलेक्ट करना है एक हर हॉस्टल से, कि एक हॉस्टल से एक दिन में प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड की फॉर्म में कितना वेस्ट निकलता है। सिर्फ मैं फूड वेस्ट की बात कर रहा हूँ, अभी कैंपस वेस्ट की बात नहीं कर रहा। मैं कैंपस वेस्ट को मिलाऊंगा तो ये टन्स के हिसाब से पहुंच जाएगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फूड वेस्ट फ्रॉम योर मेस इन सिंगल डे, प्रोसेस्ड एंड अनप्रोसेस्ड बोथ। प्रोसेस अब मैं रिपीट कर चुका हूं लास्ट टाइम, इफ यू रिमेंबर। ओके, इफ यू रिमेंबर, प्रोसेस मीन जो खाना बन चुका है और आपके प्लेट से या कंटेनर से वेस्ट हो चुका है वो प्रोसेस है। और जो अनप्रोसेस्ड है दैट इज पीलिंग एंड दैट रॉ मटेरियल जो हम उसके लिए यूज किए हैं। ओके, तो इतना ज्यादा है। अगर डाटा इकट्ठा करोगे आप तो मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ एक हॉस्टल से 1 टन है, दैट विल बी अ सफिशिएंट टन। इससे ज्यादा ही होगा वो। अनूप, हैव यू अनाउंस्ड? नहीं, मैं बोलता हूँ। Okay, yes, okay, let me announce. So if there are any student, you see this is Amit here. So if any students, because yesterday as I have announced, we will have extra class at 8:50. So incidentally Dr. Anup is also having class at this point of time. So if any of these students, mechanical 1 to 3, who have joined this link, I have sent a new link to Vidhi, your CR. So she might be circulating it to you. So please join that link immediately. So the students from mechanical 1 to 3 were sitting in this class, they can leave the class and they can join the new link. Whereas 4, 5, 6, they can stay here. There are any students? Okay, I don't think so. So I think I have a message in chat box. नहीं बेटा, ME3 का somebody saying ME3 का lecture. No, but it's not ME3. ME 1 2 3 में तेरे पास है ना? हाँ, ME 1 2 3 is with me. So ME3, please kindly join with the new link sent to your CR. The students were sitting here with the ME1, ME2, ME3. Okay, done. अनूप, मैं एक बार वो लिंक पर चैट च पा देना। हाँ, that's very good. I think so. It's very good. ME3 का आप ही लेते हैं लेक्चर? नहीं बेटा, ME3 का मैं नहीं लेता बेटा, ME 4 5 6 है मेरे पास। ME 1 2 3 डॉक्टर अमित लेते हैं। अरे ये कौन ME3 वाले हैं? सिदक? ओके सिदक, मैं एक मिनट ठहर जा, देखो मैं अनम्यूट करता हूँ, तो ही बोल यार। अमित, सिदक बोल, क्या बोल रहा है? सर हमारा लेक्चर आपके साथ ही होता है रोज।
ये Me3 है आपका? यस सर नहीं यार सर ME3 और सर ME4 वो ਦੀ ਕਲਾਸ होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸ ME4 ਦੇ ਰਹੇ तो आगे लेते हैं सर। Me3 अमित हेलो अमित आर यू हियर? हमारे पास 4 5 6 है कि 3 4 5 है क्या है? नहीं 1 to 2 is with me. ME 1 to 2 with me. हाँ sorry students 3 is with me, sorry I'm very sorry, ये confusion ME 1 with me. So okay if there are any students from ME 1 to 2, so they can leave this and they have to join a new link which have been sent to Vidhi, your CR. Is there anyone who is sitting here with ME 1 to 2? I think so there's nobody, it's only 3 4. Okay, so I think they are coming on the other link. Okay. अमित वो डाल दिया चैट बॉक्स में? नहीं, अगर कोई है ही नहीं यहाँ पे तो फिर कोई है ही नहीं ना, मतलब डालने की। अनलोड ही नहीं किया, चलो ठीक है, डन, ठीक है। okay. Sorry for the short interruption. So I was talking about this waste actually coming from the hostels. And if the 1 ton is waste for food waste is coming from one hostel, and see the number of hostels in Thapar University. And just can you imagine from this 8 9 tons, suppose I'm taking a rough example, it can be more ton of food waste from a single institution. It's not being diverted to some constructive use. It's still being discarded away. And see, we can convert this waste to a very useful product called compost, which I'll be discussing no doubt. But this is again what the fate of this particular waste actually we are dealing with. So that's why India is now facing with the problems for solid waste management. That's how I told you. If you see Delhi mountain, mountain of that kind of solid waste, it's a rough example of what we are discussing right now. Okay. So once you have all the waste with you, like waste from community, waste from institution, waste from the particular industry, waste from some hospital, waste from construction, every like from waste is coming, then you first of all must do the physical chemical characterization of this kind of waste, which I told you last lecture. Ultimate analysis, proximate analysis, heat value, this one, nutrients, density, field capacity, all the parameters you have to calculate. So once you have all the parameters with you, now you can decide which waste should go to which particular facility or management. Okay. So when you talk about energy recovery, that is a most major concern, the major concern throughout the worldwide, that is how to convert waste to energy. So once you talk about energy recovery from solid waste, अब ध्यान से सुनिए बेटा, सॉलिड वेस्ट जो है अल्टीमेटली सॉलिड वेस्ट है, जो आपका अल्टीमेट तो वेस्ट है बेटा, ये वाला डंप ही हो रहा है, डंप होके कहाँ जा रहा है, या तो लैंडफिल में जा रहा है, या माउंटेन्स बन रहे हैं, या आपका रॉक पाइलिंग हो रही है उसकी। तो अगर हम इस वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो क्या बेनिफिट है, जो हम आपको बताने वाले हैं आगे। ओके, एंड दिस कैन बी, so when you're talking about energy recovery from solid waste, there are two things which I'm talking about. First is very important, the incineration and pyrolysis. I'm going to discuss this thing in detail now, doctor, in the coming slides. Then the second is the composting. Composting is against a very good component where you are converting all the waste, which is otherwise the waste, into a useful thing which can be used in society. Okay. So first I'm going to start with incineration. What is incineration? Basically, incineration is, when you talk about incinerator, it's a controlled combustion of solid waste particulars. So when you're burning solid waste in a controlled environment, what is a controlled environment? I'm going to discuss in the coming slides. Now, again, the same thing which I have discussed in the last class. For burning solid waste, you must know first the heat value of the waste you are dealing with. If you remember, I told you last time the calorific value you need to calculate. If you need to calculate the calorific value, then you must know whether this waste should be burnt or not. And that comes from the calorific value. So calorific value, yaad hai, bump calorimeter bata kya tha maine aapko? I told you bump calorimeter. So bump calorimeter will give you
the calorific value of the waste which you have taken. So normally when you're talking about municipal solid waste, it is 8.8 kilocalorie per kg. No doubt it's not at par with the coal which we are dealing with, but it's a waste. It is coming with a no cost. The coal is coming with a huge cost. No doubt, coal is having a huge value, 545 kilocalorie per kg, but you are purchasing coal with spending huge amount of money. कहाँ से मनी स्टार्ट होती है? माइनिंग से लेके कोल रिफाइन तक और आपकी इंडस्ट्री तक पहुंचने के इसका इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर है. When you're talking about municipal solid waste, it is a free of cost thing which you're talking about. No doubt, a free of cost आ चुका, करेक्ट वैल्यू कम है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बट प्रॉब्लम है उसमें. प्रॉब्लम क्या है? No doubt, when you want this kind of waste, you need to tackle with particular dust, सल्फर, नाइट्रोजन. क्यों? आपका जो वेस्ट है ना बेटा, उसके वेस्ट में प्लास्टिक भी है, बाकी कंपोनेंट्स भी उसके बीच में मिक्स है. When you talk about mixed waste, so it will contain all the particular solid content which have sulfur, nitrogen, chlorine, all kind of things. So when you burn these kind of things, no doubt energy is being produced, but along with energy, a lot of gases are produced which may contain particular dust, sulfur dioxide, nitrogen oxides, chlorine compounds, and hydrocarbons. And no doubt, when you have all these kind of gases being produced, then you might have read from my previous lecture that APCDs are there, air pollution control devices, scrubbers. So we have done this in detail in the previous lectures. So when you talk about incinerator, that should be followed by APCD, air pollution control devices. In terms of what you want to do, particular dust remove karni hai, then APCD choose accordingly. Then you have to remove sulfur and nitrogen oxide, choose the APCD accordingly. That is scrubbers, if you remember. So I have told you scrubbers in detail. And this is something I'm talking about. Just go through this particular figure in detail. This is waste to energy plant. Waste to energy plant. This is like a waste I'm talking about. See this, I told you now, reduce, recycle, reuse. That means you have to now put into different containers. Now accordingly, the waste which is being actually meant for the processing, burning with a good calorific value is being fed to this facility. Now material is being fed. See this. Okay, when the material is being fed, it's being taken up by the crane and being fed to the burning chamber, combustion chamber. Once it is being fed to the chamber, fuel is being supplied over here. Now, फिर वही बातें आएंगी जो लास्ट टाइम मैंने बताई थी, सब यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी और जो मैं क्वेश्चन हमको एग्जाम से पूछेंगे और एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आएंगे आपको चीज. जितना वेस्ट आपका ड्राई होगा उतना फ्यूल कंजम्पशन कम होगी. क्यों? अगर वेस्ट में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है बच्चे, तो आधा फ्यूल जो नीचे सप्लाई कर रहे हैं, फ्यूल पता क्या है बेटा? फ्यूल इसको बर्न करने के लिए. ऐसे बर्न होगा नहीं बेटा ये चीज. इसको बर्न करने के लिए यू नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल. नाउ फ्यूल यू वांट टू यूज will be used in a huge quantity if your waste is wet, because most of the fuel will be used to remove the moisture only. But if it is relatively dry, relatively, I'm saying I'm not going to remove all the moisture, relatively dry, the less fuel is being used to burn all this kind of waste. See this, when the waste is being burned, you have two chambers, primary and secondary chambers. I'm not going to detail of that. So huge temperature is being generated over here. Huge temperature means it can be of 500, 600, sometimes 800, 1000 degrees centigrade. You can have this temperature. Now at this temperature, when you have, see this, you have coils. And what is a coil? Coil is having a water inlet. Okay, once you have a water inlet, water is flowing inside these coils. Water is flowing inside these coils. The heat that is being generated in this particular combustion chamber is being supplied to these coils. Now, when this heat is being supplied to the coil outside, huge temperature rise will be there inside the coils. So water start evaporating, boiling. Then when start boiling, evaporating, the steam is being produced. When the steam is being produced, the steam is being taken to the power generation system, where the steam is used to run a turbine, and accordingly generator is being collected, electricity is being produced. See this electricity is produced from the waste only. No coal is being used. Okay, so this is something you can go through, beta. This is condensed steam is taken back. Condensed steam is again, condensed steam में क्या होगा? Water, फिर water बन जाएगा. No doubt. The steam is condensed, water is being again formed. This water is again taken back by the cooler to the same section again.
फिर स्टीम बनने पर शुरू हो जाएगा, वाटर रिसाइकल यूज हो जाएगा सारा बेटा। नाउ सी दिस, ऑल द वेस्ट कैन नॉट बी बर्न्ड। अब ये क्या निकल रही है, अगर आपको याद है तो ऐश है। ऐश आपको याद होगी, ये वाली ऐश नहीं, ये तो कुछ और ऐश है, ये वाली ऐश। तो मैंने बताया था ना कि कुछ ऐश कंस्टिट्यूट होते हैं कि जो पूरा वेस्ट बर्न करते हो तो कुछ अमाउंट ऐश की भी रह जाती है। ओके, तो ऐश नीचे से डिस्कार्ड करके लैंडफिल में डाल दी जाती है, और लैंडफिल क्या होती है, आई एम गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। ओके, नाउ द गैसेस व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ओवर हियर being fed to the, see this, spray dryer, bag house, if you remember. Okay, bag house. So bag house filter, if you remember, depending on क्या है आपके पास, पर्टिकुलर डस्ट है, पर्टिकुलर मैटर है, तो डस्ट रिमूव होगी, तो डस्ट रिमूव को हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स में डाल देंगे, इसको ऐश बोलते हैं, ये रिमूव हो जाएगी। और स्प्रे ड्रायर्स हो सकता है। ओके, सो इट कैन बी तो सेम treated air, the gases is being released to chimney outside. See this. ठीक है, सो ऐश इज गोइंग टू लैंडफिल, मेटल्स, तो ये हर जगह यूज हो सकती है बेटा जो फ्लाई ऐश बनने के लिए, बाद में बताएंगे इसके बारे में। सो दिस इज ओवरऑल वेस्ट एनर्जी प्लांट. So I have explained enough about each and every part of the waste energy plant. So when we want to ask this question in your exam, we are expecting that you should write each and every detail which we have discussed with you. कहाँ से कहाँ स्टीम आती है, क्या बर्निंग होती है, क्या टेम्परेचर होता है चीज के लिए, और कहाँ से ऐश निकलती है, कहाँ से बॉटम ऐश निकलती है। ठीक है, so in the system, when you operate this kind of system efficiently, the 70% heat recovery is there. Okay, why I'm saying 70% heat recovery, because you can't have 100% recovery. A huge waste is also there. So amount of steam produced from here is going to vary between 1.1 to 3.5 kg per kg of municipal solid waste. This means if you burn 1 kg of municipal solid waste, accordingly 1 to 3.5. That's how you are going to deal with process of this process. Okay, how are you going to control this particular process? If you're controlling it very efficiently, so it can be 3. If you're not controlling efficiently, for 1 kg, you are just generating 1.5 near about kg of steam. Okay, so it all depends on you. So more efficient controlling means more efficient steam, more quantity of steam. More quantity of steam means more burning. Sorry, more particular electricity is being produced. Okay, so there are a few questions which will be in order of dealing with in this incinerator, and you will be also getting this question in your exam. So incineration is defined as the controlled burning of solid, liquid, or gaseous waste. So it can be any kind of waste depending upon from where this waste is coming actually. Okay, it can be liquid waste, it can be gaseous waste, it can be solid waste. Okay, so why controlled burning? First, big question. You can note it down, you can go through, because it's a very simple question, so you can go through literature. It's very simple answer, beta. Very simple answer. Controlled burning क्यों होती है इसके बीच में? If you not have a controlled burning, क्या होगा? ठीक है, इसको पढ़ना, वो डाउट है मेरे को पूछना, आप डोंट वरी, वेरी सिंपल आंसर बेटा. नाउ देयर आर 3 प्राइमरी पर्पसेस ऑफ इंसिनरेशन, जो हम इंसिनरेट करते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ये देखो अभी दिखाया ना. सो वेस्ट एनर्जी प्लांट, देयर आर 3 प्राइमरी पर्पस ऑफ डूइंग इंसिनरेशन. एंड यू नो द हॉस्पिटल्स, generally hospitals, all the hospitals, they have a mandatory provision to have an incinerator in their premises. Why? A very big question. Why? Because of one thing, जो आगे भी बताने वाले हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वेस्ट में जो वेस्ट आएगा वो हम कॉमन लैंडफिल में या ओपन डंपिंग नहीं कर सकते. इट इज अ टोटली हजार्डस वेस्ट. हॉस्पिटल वेस्ट इज अ टोटली, लैब वेस्ट हो गया, ऑपरेशन थिएटर वेस्ट हो गया बेटा, वार्ड वेस्ट हो गया, ऑपरेशन थिएटर में जो बेड शीट्स हैं, and then all injections, used injections. So you cannot treat, you cannot recycle, you cannot dump it in a landfill as such. Okay, so only option is you have to burn it. So that's why each and every hospital is supposed to have an incinerator in their premises to burn in all this kind of waste. So if they are burning it efficiently, they are controlling it efficiently, they are managing it efficiently, this waste which they are burning, उनके पास ऑप्शन है नहीं बर्न करना है. If they are burning, then they are producing a lot of energy, and this energy can be used to run a turbine through steam, and this electricity can be used to run their hospitals. So they can really
No, become independent by maintaining their own particular electricity, this particular kind of stuff. Okay. Moreover, see this, the first primary purpose of incinerator is the volume reduction. कैसे? सीधी सी बात है, आप 100 किलो बर्न कर रहे हो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट या हजार्डस वेस्ट में हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, और सारा तो बर्न हो गया, बचा क्या? ऐश की फॉर्म में कितना बचाएगा? 10%, 20%, 30%, डिपेंडिंग ऑन उसमें ऐश कितनी है। तो अगर हम अब ऐश को लैंडफिल में डालेंगे, जो मैंने बताया था, जो आगे डिजाइन बताने वाला हूँ लैंडफिल का। अब लैंडफिल जो है वो क्या है, मैं मिड टाइम बताऊंगा आपको। तो लैंडफिल में अगर आपके पास 100 किलो वेस्ट जा रहा है और 10 किलो वेस्ट जा रहा है, डिफरेंस तो है ना बेटे। तो अगर 10 किलो वेस्ट जा रहे हो तो लैंडफिल की लाइफ बढ़ जाएगी। लैंडफिल क्या होती है बेटा, मैं आपको विद टाइम बताऊंगा। विद टाइम लैंडफिल इज द अल्टीमेट ऑप्शन, जहां कुछ नहीं आप कर सकते ना बेटा, उसको लैंड के अंदर दबाना पड़ता है, बस दबा के रख दो, उस लैंड पे जिंदगी भर कुछ नहीं होगा, जैसे लैंडफिल साइट। हाँ, तो उसमें अगर हम कम से कम भेजें तो लैंडफिल की लाइफ जो 10 इयर्स है, 15 इयर्स है, 20 इयर्स है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 30 इयर्स, 40 इयर्स, बिकॉज वो लैंड इतनी बड़ी होगी बच्चे, इट कैन बी एज ह्यूज एज थापर यूनिवर्सिटी, as huge as Thapar University. So if it's a big land, accordingly ये डिस्कार्डेड लैंड हो जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। आपको पता है, लव कैनाल किया आपने इस चीज के बारे में, ठीक है। सो प्राइमरी पर्पस ऑफ इंसिनरेटर इज द वॉल्यूम रिडक्शन। सो प्रैक्टिकली यू आर टॉकिंग अबाउट 50 to 60% वॉल्यूम रिडक्शन इज बीइंग अचीव्ड as it can be achieved in the incineration. Okay, so that's why I told you the incinerator waste, अब अभी बताया मैंने आपको, occupies only a fraction of landfill where when compared to the unincinerated waste. Part obvious, okay. And no doubt, I told you the second purpose of incineration is waste to energy. Always, yes. Second purpose of incineration is waste to energy. You are burning waste, you are converting it to heat. This heat is to produce steam from water, and the steam used to run turbine, and accordingly electricity is being produced. So the second major purpose is to have energy from the waste. And no doubt, third purpose by default is being solved. It is detoxification. I told you now hospital waste right now in the previous slide. You don't have any option for the hospital waste. It's a deadly waste. It's a hazardous waste. It's pathogenic waste. Okay. So if it's a pathogenic waste, it's a dead waste, hazardous waste, then there's no option. You have to detoxify. And if you're burning it, by default, you are detoxifying it. Okay. So the three purpose of incineration you have to discuss in detail whenever you will be asked this question in your exam or somewhere else. Okay. ये पढ़ लेना बेटा. So when you're talking about incineration, you need to discuss some kind of combustion concepts. Why combustion concepts? Because incinerator is nothing but combustion. Incinerator is nothing but combustion. So if the combustion is not accurate, combustion is not okay, if the combustion is not controlled, then you are wasting energy for getting a least output. Okay. So you know about this combustion process. This is efficient combustion you're talking about with the minimum air pollutant emission requires primarily stoichiometric air that takes combustion action to the completion. Because if there is an incomplete combustion, then you will be having a formation of CO, carbon monoxide. Okay. And you don't want the carbon monoxide to release as such. And carbon monoxide is released only when you have an incomplete combustion. So design your process by providing a stoichiometry air. You know what is stoichiometry air? Stoichiometry is like this. This is stoichiometry air. This is a hydrocarbon. Hydrocarbon is H is a hydrocarbon. Is from the municipal waste. It requires oxygen and burn it, going to produce this thing. And this is as per the stoichiometry. This 1 mole, 2 mole require this mole, then do the stoichiometry. Okay. But you require more than the stoichiometry because all the oxygen is not consumed for only hydrocarbons. See this. However, not all the hydrocarbons convert the hydrocarbon dioxide impurities to convert, okay, such as sulfur. So impurities is also there. So sulfur, nitrogen. So they always take oxygen also. So the
oxygen which was meant for the hydrocarbon will also be taken up by the sulfur and nitrogen compounds. So that's why it's being always recommended that supply the air more than the stoichiometric air. Okay. So this is a concept where you can have fluidized bed incinerator. Okay. Fluidized bed incinerator is what you're talking about. See this, what I'm doing over here. I'm now spending energy to get the more energy. Now waste, which, so this is a waste being supplied to the grate of this kind of, जो मैंने अभी बताया, देखो ये बताया था, यहाँ पे मैंने वेस्ट सप्लाई किया, यहाँ बर्निंग स्टार्ट हो रही है, पर मैंने अब इसको फ्लूइडाइज बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया. क्या करूंगा मैं, नीचे से एयर सप्लाई कर दूंगा. ये देखो फ्लूइडाइज एयर सप्लाई हुई नीचे से. जैसी फ्लूइडाइज एयर सप्लाई हुई तो वेस्ट यहाँ पे होगा वो फ्लूइडाइज हो जाएगा. तो जैसे फ्लूइडाइज होएगा एयर में तो आपका मास ट्रांसफर बढ़ जाना बेटे. ठीक है. अब ध्यान से एक चीज देखना बेटा, समझना कि फ्लूइडाइज क्या होता है, क्यों कर रहे हैं हम जिसके लिए, आगे भी आएगा ये चीज. व्हाई वी आर डूइंग दिस, although we are going to spend energy for what. आपने देखा होगा कि गांव में जो चूल्हा जलता है, ओपन बर्निंग जो होती है, चूल्हा जिसमें खाना बनता है, तो लेडीज यूज टू ब्लो द एयर विद द पाइप. The ladies which are really working on the chulhas to make the food, they blow the air through pipe. You know what they are doing? When they are blowing the air through pipe, they are creating a turbulence inside the chulha. When they are creating turbulence inside the chulha, that means more air penetration into the deep of the chulha will be there. When the more efficient circulation of oxygen will be there, when the more efficient circulation of the oxygen will be there, there's a more efficient burning. तो आपने एक तरह से देखा होगा कि जहां आग नहीं भी होती वहां पे आग जलनी शुरू हो जाती है. That is called turbulence. So हमारा पर्पस यहीं पे है. So what we are doing over here, in spite is instead of burning that waste on the grate itself, you supply the air from the bottom. You supply the air, the bottom, it gets fluidized. Municipal solid waste get fluidized. When it gets fluidized, so it is getting heat penetrated at each and every corner of the fluidized bed chamber. When the heat is penetrated each and every part of the fluidized incinerator, more efficient heat transfer to the water so that it can convert it to steam. Okay, so this is one of the application of fluidized incinerator. You can really ask me if you have any doubt afterwards. So these are the three factors. Just go through these factors in detail better. So these three factors generally affecting the combustion inside the incinerator. That is triple T, time, temperature, and turbulence. Turbulence, just like I have explained to you. What is temperature? So temperature is, you must maintain a minimum ignition temperature in the system, in the incinerator, in the combustion chamber, in the presence of sufficient supply of oxygen, so as you sustain the combustion. And if you're not providing this, if you're not having attain this required temperature, you will be not getting a sufficient conversion of water to steam. Okay, so each combustible substance has a minimum ignition temperature that must be attained. Okay, so that's why when we have this kind of waste, we have first experiments in the lab. What is the minimum ignition temperature? What is the minimum burning temperature of this kind of waste? So you should maintain that kind of temperature so that all the waste which is present in the system burn efficiently. In the बाद में पता क्या होगा? बाद में ये होगा कि आधा बर्न हो जाएगा, आधा बर्न होगा ही नहीं, क्योंकि आपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन किया नहीं इसके सिस्टम के बीच में. और टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? Providing a sufficient oxygen. Okay, sufficient fuel प्रोवाइड कर दिया. अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की तो वो फ्यूल देना बेकार हो जाएगा, वो बर्न नहीं होगा बेटा वो चीज, बिकॉज आपको पता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट चाहिए आपको. ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग नहीं हो सकती बेटा. So I've explained you enough beta. From here you can really judge, you can write when a question comes in the exam. Then time की बात होगी बेटा. सफिशिएंट ऑक्सीजन दे दी, सफिशिएंट फ्यूल दे दिया, बट अंदर हमने रेजिडेंस टाइम सेम नहीं दिया उसको. व्हाट इज रेजिडेंस टाइम? मींस मिनिमम टाइम शुड बी देयर ना. देखो ना, चूल्हा बर्न करते हैं लेडीज, और आपने देखा होगा, और कोल बर्न करते हो आप, एक दूसरे से बर्न होगा नहीं बेटा. रेड हॉट होने के लिए इसको टाइम लगेगा, एंड रेड हॉट होने के बाद वो एक्चुअल हीट प्रोवाइड करता है.
So residence time of the input waste in the high temperature region must be there and should exceed the time required from combustion. Why it should exceed the time required for the combustion? Because for the complete burning. Okay. And turbulence. Turbulence is no doubt, I told you, go through thorough mixing. You need thorough mixing, beta. Okay. Go through, beta. And these are the certain advantages for the waste incineration. You can go through beta very fast. I have explained you each and every part. Okay. You just go through it. If you have doubt, you can ask me. So whatsoever advantages are written over here, I've explained to you. Okay. And no doubt, same time you have some disadvantage also. No doubt, high capital cost. Why? Because incinerator is like installation of incinerator capital cost, maintaining cost, running cost is too high because you need APCD also. Because जो gases निकलेंगी ऐसे release नहीं हो सकती वहां पे बेटा. Okay. So some materials require supplement fuel because some materials, they are very not, like easy to get combusted. So you need supplementary fuel to be there inside the system so that they also get burned. Okay. क्यों? देखो पेपर गया है अंदर, प्लास्टिक गया है, रबड़ गया है, ग्लास गया है. सपोज ग्लास नहीं मींस अब मैं कुछ और प्लास्टिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ. सो दे रिक्वायर एडिशनल फ्यूल. उस टेम्परेचर बर्न नहीं होगा, हाई टेम्परेचर बर्न होगा वो चीज. ओके. So gasification and pyrolysis, you can go through this very fast beta. अब gasification क्या होता है बेटा? Gasification is the high temperature burning of fuel so that it get converted to gas directly. So basically, you must have heard about syngas, synthesis gas. It's basically a hydrogen, methane, ammonia, and carbon dioxide. And it's having a very good calorific value. Syngas, no doubt, gasification is very tedious phenomenon because it requires a very high temperature, why high pressure inside the chamber, so that you get gas, solid get converted to gas. See this, it involves two steps. High temperature gasification of the organic waste constituents and direct fusion of the inorganic components. Okay. So this is a second thing which you really can go for municipal solid waste or other waste. Okay. Although you have a very good output there in terms of syngas or synthetic gas, which is having a very good calorific value, and it can be used anywhere for burning. Okay. But the process is very tedious because you need to have an extremely high temperature, extremely high pressure to get the syngas from the waste you are dealing with. Okay. इसको एक बार पढ़ लेना बेटा. This is something I'm talking about. See this, you are going to maintain a temperature of 1200 degrees centigrade. Okay. So what sort of gases are being produced? These gases are being quenched in a scrubber. So why? Because this is impure gas which is produced. So you are quenching in a scrubber so that the other gases which are not being required be scrubbed off and the syngas cleaning can be done. So this is getting a syngas cleaning. Okay. See this. Synthetic gas production of hydrogen, methane, methanol, ammonia. Okay. So this is basically you're talking about gasification. And you have a last step in waste to energy conversion is the pyrolysis. Pyrolysis, you know what? You must have read in +2. Pyrolysis is breaking up of long chain hydrocarbons to small chain hydrocarbons. Okay. So this is again a very good part. We're talking about getting low chain particular hydrocarbons which can be used depending upon their where they're going to apply. So like charcoal, bitumen, bio oil, fuel gas. See this generates
heat value products such as gas or liquid. This is gas, this is liquid, bitumen type, or this is gas. Oil is the liquid, sorry. Okay. So low oxygen process to release chemical energy. It's less used because the high capital investment and low waste aggregation practices. Because pyrolysis is only applicable on a certain category of waste, which can be converted to either bio-oil, fuel gas, and charcoal and bitumen. Okay? It's nothing but better. You are getting high temperature processes there. You get breaking the long chain molecules to get a small chain molecules, and these small chain molecules can be a bitumen, charcoal, depending on application we're going to use. Okay, so this is again application. You need a huge diesters like this. You see this. This is a pyrolysis in Japan. Okay, you need a huge diester to have this kind of thing. It's not easy to maintain. Okay, now Japanese and these countries are very traditional using these kind of technologies. So these are the hurdles. Beta, basically these are the hurdles talking about. In India में सबसे बड़ी बात तो यही है जो मैं ये दिखा रहा हूँ. There's a lack of coordination between state government, central government, and municipalities. Central government is giving a huge fund force to state governments. As state governments is supposed to allocate this fund to the different municipalities to work on these kind of things. ठीक है? तो भाई साहब वो पैसा आपको पता है सबको कहाँ जाता है. ठीक है जी. सेंट्रल गवर्नमेंट पहले जितना देती है वो स्टेट गवर्नमेंट से वो 50% इधर जाता है, 50% खर्च करके 50% आगे मार्केट में जाता है. तो मार्केट में जाएगा तो अल्टीमेटली वो इंप्लीमेंट भी वैसे होगा बेटा. ओके, सो दीज आर द हर्डल्स. नाउ द नेक्स्ट इज द कंपोस्टिंग. यू गो थ्रू दिस स्लाइड वेरी फास्ट. बाकी मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करूंगा, उसको वाइंड अप कर देंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा. नो ओके, you go to the slide better composting. Okay, so composting is what you know very well. घर में भी करते होगे आप. जितना भी आपका वेट वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड टू कंपोस्ट. ओके, तो ये साइड पढ़ लो, फिर नेक्स्ट कल मूव करेंगे बेटा. ठीक है. सो दिस इज अदर यू आर पुटिंग. अब कोई बंदा बोले सर कंपोस्ट करने की जरूरत क्या है, 2 मिनट लगते हैं कंपोस्ट बनने में. सीधा डाल दो इसको सॉइल में. जो फूड वेस्ट है ना, सीधा डाल दो. यार्ड वेस्ट है, सीधा डाल दो उसके बीच में, सॉइल के बीच में. सर कंपोस्ट ही बन जाएगी. व्हाई? व्हेन वी डू टू दिस direct introduction of shredded organic waste into soil, this will lead to the anaerobic transformation of the waste which you are putting in the soil. That will generally produce gases, ammonia, foul smell. आपको आती होगी ना, करके देख लो. वेस्ट डाल दो सॉइल के अंदर, छोड़ दो, foul smell शुरू हो जाएगी. That foul smell is just because the anaerobic transformation going in that kind of waste, leading to the production of ammonia, hydrogen sulfide, methane, all kind of thing. सबसे बड़ी बात दूसरी, सर सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कंपटीशन ऑफ माइक्रोब्स फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट्स. और जो न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए हैं वो माइक्रो में शुरू कर देंगे उसके बीच में. Most of the nutrients that are present in the waste will be consumed by the growing microbes, making it unavailable for the plants. That's why, first of all, this whole waste I'm talking about is being converted to first compost, then it is being put to soil. ठीक है, बात वही आ गई. इसको मैं एक बात बोल खत्म करूंगा. बात वही आ गई. आप घर में अपना खाना खाते हो ना बेटे, चपाती खाते हो, परांठी खाते हो, तो कोई बंदा पूछे कि सर इतनी एफर्ट क्यों करनी है, पहले आटा गूंदो, फिर उसकी चपाती रोटी बनाओ, सब कुछ करो. सीधा आटा ही खा लेते हैं. बात वही आ गई ना, आटा ही खा लेते हैं. आटा नहीं खा सकते. अच्छा आटा छोड़ो ना, आटा गूंद के कच्चा आटा खा लो. वही आगे चीज. When you process this kind of food, that wheat, on a particular gas by utilizing some techniques, get it to form a chapati or pronti, then it will be very tasty.
The same way, when you are having this kind of waste, when you want to put kind of waste in the soil, you can't put the waste as such in the soil. First of all, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए जिस फॉर्म में वो लेना चाहता है plants. That is a form of compost. That is mineralizing the simple early assimilable substances जो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे, इजी कंज्यूम हो जाएंगी, लाइक प्रोटीन, सेलुलोज, लिग्निन. ये कैसे टूटेगी? ये वेस्ट रखा है, कंपोस्ट कर रहे हैं, माइक्रोब्स एक्ट कर रहा है, माइक्रोब्स एक्ट करके इसको तोड़ देगा. इसे तोड़ेगा, किसमें कन्वर्ट होगा? वेस्ट उसी में कन्वर्ट होगा जिससे वो बना हुआ है. किससे बना वेस्ट? या तो प्रोटीन से बना है, सेलुलोज से बना है, स्टार्च से बना है, नाइट्रोजन कंपाउंड से बना है. तो ये सारे कंपाउंड फिर से आ गए, तो ये सीधे प्लांट को लेनी बहुत इजी है बेटा. ओके, so time is there, beta. Time is over, so I think so I should stop here.